Assalamualaikum. Welcome to Medical Club e-learning. Today we will discuss chapter 3 of proteins from Lippincott. Proteins में से आना है 8 SCQ and 6 MCQ. Moving forward. Okay. Globular heme proteins. आपने इसको एक रीड देनी है. Structure of heme is a UQ और ये MCQs में भी आ जाता है. और this is the structure of heme. Or next, move forward. Structure and function of myoglobin is very important for MCQ as well as for the MCQ. और जो ये आपने इसकी सारी डिटेल याद करनी है. On this page, structure and function of hemoglobin. Structure of hemoglobin is very important. ये SCQs में आ जाता है. Draw the structure of hemoglobin. So you should know it. Read this box. Give this box a read. और उसके बाद है quaternary structure of hemoglobin is very important for MCQ and SCQ. Question आता है explain the quaternary structure of proteins with reference to the hemoglobin. This is a very famous UQ. Moving forward, okay, you have to just see this diagrams for MCQs. इसमें important बातें हैं जो कि नीचे explain की हुई हैं. Okay, what is T form and R form? These are very important for MCQs and for the SCQs. Binding of oxygen to myoglobin and hemoglobin. Just read this for MCQs. Okay, oxygen dissociation curve. This is a UQ. You have to learn this graph as well. फिर myoglobin और hemoglobin इनकी जो characteristics यहाँ पे लिखी हुई हैं, you have to learn this. Moving forward, allosteric effectors नहीं करने हैं और ये नहीं करना है इसमें से ज़्यादा. उसके बाद जो significance है of sigmoidal oxygen dissociation curve, just you have to give it a read, and there's nothing else to learn from this page. ये भी पेज नहीं करना. There's nothing to do from here as well. Okay. This table is very important for MCQ. बहुत पूछा जाता है. SCQs में भी डायरेक्ट पूछा जाता है क्योंकि चेन कॉम्पोजिशन क्या है. और माइनर हेमोग्लोबिन जो हैं आपको याद होने चाहिए उनके नेम और उनकी डिटेल्स दोनों. फीटल हेमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, कहाँ पर होता है, क्यों होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. HbF इज इम्पॉर्टेंट. ओके, बाइंडिंग ऑफ 2,3-PPG to hemoglobin. Yes, इसको आपने सब रीड देने हैं. You don't have to learn this, just read it. और hemoglobin A2, HbA2 is very important. HbA1c is very important. बहुत ज़्यादा पूछते हैं इनकी. और उसके बाद है organization of the globin genes is a UQ, alpha gene family and beta gene family, and then the beta gene family. You have to elaborate this. And then steps in the globin chain synthesis is a UQ. It's an important UQ. और ये आप फिगर देख सकते हैं. ओके, हेमोग्लोबिनोपैथीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत ज़्यादा पूछते हैं. सिकल सेल एनीमिया वाइवा क्वेश्चन है, फेवरेट वाइवा क्वेश्चन है. हेमोग्लोबिन एस डिजीज भी कहते हैं इसको. आपने इसकी सारी डिटेल याद करनी है. उसके बाद है अमीनो एसिड सब्स्टिट्यूशन इन HbS beta chains. You have to learn this. Sickling and tissue anoxia. You have to learn this. Then variables that increases sickling, just give it a read. Treatment is important. Okay, hemoglobin C disease is very important. Hemoglobin SC disease is very important. इनमें से scenario based SCQs आ जाते हैं. Meth hemoglobin is SCQ, very important. Thalassemia is very important for UQ and MCQs and viva as well. और अल्फ़ा कौन सा है, सॉरी बीटा थैलेसीमिया क्या है, अल्फ़ा कौन सा है. यू हैव टू लर्न दिस, मेमोराइज दिस इन अ वेरी परफेक्ट वे. और ये जो टेबल सॉरी समरी है एंड के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर क्विक रिवीजन.
एंड फॉर वाइवा एज वेल ये बहुत हेल्प करती हैं जब आपने पूरा चैप्टर तैयार कर लिया हो एंड वी आर डन विद द मार्किंग. आई होप यू अंडरस्टैंड. प्लीज डू कंसल्ट MBBS क्रैक बुक्स फॉर बेस्ट क्वालिटी MCQs and MCQs. Thank you and Allah Hafiz. Medical Globe introduces its series of successful publications, MBBS Cracks, the benchmark of all, containing all the chapter-wise questions of prime importance, all annual and subtly solved university questions, questions to ace your vivas, chapter polls, and of course, we have incorporated all the labeled and histologic and anatomic models in high resolution for your distinction level OSCE preparations. Medical Globe has also launched a gem in the medical world to master every concept for your multiple choice questions, the MCQ cracks encompassing UHS, NAMS, and many others, revealing the UHS MCQ rank, your practice MCQs, and topic-wise MCQs. Get your MCQ and the MBBS cracks at your doorstep by placing your order at 0335 66 33007.